देन नेक्स्ट इज योर नॉइज चैनल। देखिए नॉइज चैनल का मतलब है यहाँ पे एक्चुअली एरर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज असिस्टेंस में आप क्या करते हैं, कभी कभी गूगल को कुछ बोलते हैं तो वो बोलता है नो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो व्हाट इट मीन्स दैट हाउ वी कैन करेक्ट इट। ओके, तो आपको क्या होता है, वो बोलता है नहीं इट मे बी दैट, ये हो सकता है, देयर इज सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। उसमें से फिर आप क्या करते हैं, ये आप क्लियरली उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हाउ नॉइज चैनल मॉडल माइट वर्क विद द स्पेल चेक प्रोग्राम, वो कैसे है। So when a word is not found in the spell check dictionary, okay, it is identified as a misspell and candidate word can suggested based on their probability of being the intended word. Means what? इसका मतलब ये है कि इंटेंडेड, यदि आपके जो भी आपने वर्ड आपने बताया, इट इज नॉट मैचिंग विद दैट, बिकॉज यू नो दैट इन डिक्शनरी every word is very much filtered. But suppose you, if by mistake you have you have used some noise or misspelled word, then ये आपका क्या, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैंडिडेट वर्ड। कैंडिडेट वर्ड मीन्स न्यू वर्ड, हाँ, टू बी सजेस्टेड। तो वही आपका असिस्टेंट क्या करता है, सजेस्ट करता है। सो यूजुअली a result of how close those word are to be misspelled, कौन कौन से हैं। So as per most likely candidate will involve in a single change, or maybe that your four different type of single channel में error में क्या हो सकता है, insertion, deletion, substitution and also reversal। आप पूरे मिस स्पेल में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी आप देखिए फॉर वन एग्जांपल ऑफ मिस स्पेल, इफ द मिस स्पेल्ड वर्ड इज ACRESS, क्रेस आपने लिखा है, क्रेस मान लीजिए आपने लिखा मिस स्पेल। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखे हैं ACRES, ऐसा भी लिख सकते हैं। कुड बी could have been intended, but an extra s is added here। okay, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक्ट्रेस could have been intended, but the t is what as missed। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक्ट्रेस भी आप बना सकते हैं। सो मिस स्पेल एशिया अक्रॉस वुड हैज बीन इंटेंडेड, बट ई इज टाइप इंस्टेड ऑफ दैट ओ। समझ रहे हैं ना। सो अक्रॉस कैरोस, कैरोस एक्चुअली मिस स्पेल में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। सो वुड हैव बीन इंटेंडेड बट द फर्स्ट टू लेटर type is wrong in sequence। So this is the use if the user type across the spell checker program might what suggest these four words आपको suggest करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका कि ठीक है कोई आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग में कर रहे हैं, लेकिन सेम थिंग इन स्पीच एनालिसिस में भी हमारा होता है। सो ड्यू टू द vaguenesses of the human speech, vagariness of the speech, the potential of the actual noise, the speech recognition software has been added challenge to the text based system चाहिए, ठीक है। and this is the framework of similarity, ठीक है।